So today we will do the first application of Z test, that is the test of significance of single mean, right? So here we have only one population, and from that population we will draw the sample, and here the statistic will be X bar, sample mean. Because on the basis of the sample mean, we will check whether the population mean is equal to this or not, or is there any significant difference between the population mean and the sample mean. So step number 1, we will set the null hypothesis H naught, that population mean is equal to mu or mu naught, whatever it is, okay ji? Or there is no significant difference between सैंपल मीन, क्योंकि अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक का काम कौन कर रहा है, सैंपल मीन, एंड हाइपोथेटिकल population mean, right? So what will be the alternative? Alternative you will write here, this is a null hypothesis, this is alternative hypothesis. So alternative hypothesis क्या आएगा, क्या possibility? अभी तो we are just doing the article, right? So this is not equal to 0, or this is greater than mu, or it is less than mu. ये सारे cases किसके लिए हैं? और का मतलब क्या है? इन तीनों में से एक ही सेट होगा एट द टाइम, ये नहीं कि हम तीनों इकट्ठे सेट कर देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी. So this is the population mean. So this is two-tailed alternative. This is right-tailed alternative. This is alternative. And this is the left-tailed alternative. Right? So, and we will, number third point, let alpha be the level of significance. So what we have done, so let x1, x1, x2, xn be the random sample that has been taken from the a population, right? So now number 4 पे जब आपने test statistics लगाना है, so we are having the sample mean. Sample mean कैसे बना है? Sample value से. So you will write let x1, x2, x3 so on up to xn be the random sample taken from given population. ठीक है जी? Then x bar will act as a sample statistic. And by central limit theorem, we know that x bar follows normal distribution with mean mu and variance sigma squared by n. It implies expected of x bar is equal to, it implies expected of x bar is equal to mu and variance of x bar is equal to sigma squared by n, implies standard error of x bar is equal to sigma by under root n. So जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है, जो Z है, वो एक्चुअली एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है. ठीक है जी? उसके बाद हम नंबर 4 पॉइंट की बात करेंगे, टेस्ट स्टेटिस्टिक अंडर H नॉट. Z इज इक्वल टू, स्टेटिस्टिक का नाम है यहाँ पे एक्स बार, क्योंकि हम टेस्ट किस पे लगा रहे हैं, सिंगल मीन पे लगा रहे हैं. Expected of x bar divided by standard error of x bar. This follows n01. So you will put the value. This is x bar. This is minus mu. Standard error is sigma by under root n. This follows n01. Right? So this is the step number 4. Now step number 5. You will write the critical value. Critical value of z at अल्फा. ये कौन सी वैल्यू आई है? दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z.
the critical value of Z at alpha level of significance and for given tail of test. Why I am writing here given tail of test? Because this is an article, this is a generalization. So हमें जब क्वेश्चन में हमें पता चलेगा भी हमने टू टेल अप्लाई करना है, राइट टेल अप्लाई करना है और हमें लेफ्ट टेल अप्लाई करना है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर फॉर गिवन टेल ऑफ टेस्ट. जो भी हमारा टेल ऑफ टेस्ट होगा दैट इज जेड अल्फा. ठीक है जी, ये हमने जेड अल्फा लिखी. नंबर 6 पॉइंट. अब आएगा कंपैरिजन. कंपैरिजन अगर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा हो गया, इफ मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जेड अल्फा, इट मींस जेड की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में चली गई. इट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ जेड इज सिग्निफिकेंट. वैल्यू ऑफ जेड इज सिग्निफिकेंट. दैट इज व्हाट यू विल राइट. दैट इज देयर इज अ significant difference between sample mean and population. इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट नहीं कर पा रहा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया. पॉपुलेशन मीन इतना है, उसको किसने एस्टिमेट करना था? उसको एस्टिमेट करना था सैंपल मीन ने. लेकिन जब हमारा नल हाइपोथेसिस ही रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस है. तो सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. सो वी कंक्लूड दैट पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू इज. बस अब देखो, पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू म्यू और ग्रेटर देन म्यू और लेस देन म्यू. कोई भी इन तीनों में से हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट. अगला जो भी स्टेप है, अब अगला कंपैरिजन क्या है? इफ मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड जेड अल्फा से पीछे आ गया, इसका मतलब पॉइंट क्रिटिकल रीजन में नहीं गया, उससे पीछे ही रह गया. इट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ जेड इज नॉट सिग्निफिकेंट. Therefore, it implies there is not a significant difference between sample mean and population mean. ठीक है जी. So it implies we conclude that population mean is equal to mean, right? Population mean is equal to. So in the previous steps where I have taken the random samples x1, x2, xn, so they are working as a independent random variables. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? क्योंकि ये random है, so ये independent क्या है? Random variable. So you can add there. These all the sample values are the independent sample observations. Okay? So this is all about the test of significance for single mean, right? So now on the basis of this, we will do one question. So you can see the theory from the book also. I have more elaborated the theory. मैंने ज़्यादा elaborate करके बता दी है आपको. So here the test statistic is sample means minus population means divided by standard error of sample mean. ठीक है, you will add here standard error of sample mean. उसी तरह से देखिए, ऑल्टरनेटिव ले लिया, नल ले लिया. ठीक है जी. देन मैंने z आपको लिखवाया यहाँ पे, we have written z, so you can add here. मैंने लिखवाया z bar minus expected of x bar divided by standard error of x bar. जब हम इसको ओपन करेंगे, जब हम इसको एक टेक्स्ट में लिखेंगे तो ये सैंपल मीन माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन. इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको. और सैंपल मीन क्या है? एक्स बार, वही वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी. और एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन हमेशा म्यू होता है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार. सो ये जो है आप यहाँ पे इसको पहले स्पेसिफाई कर सकते हैं. और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉपुलेशन मीन होती है. सो z इज इक्वल टू
sample mean minus population mean divided by standard error of sample mean. ये एक फॉर्मूला बनता है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज एक्स बार, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार divided by standard error of x bar. So this comes out to be x bar minus mu upon sigma by under root n. So this follows n01, right? So you may elaborate the formula. So decision, I have already told you, you will compare the critical value with the tabulated value. Now, one more thing, notice here, if population standard deviation sigma is unknown, जब हम standard error of x bar लिख रहे हैं and we are using sigma there, कई बार क्या होता है हमें सिग्मा दिया नहीं होता, ठीक है, सिग्मा इज नॉट प्रेजेंट इन द जो भी क्वेश्चन है उस डाटा में अगर प्रेजेंट नहीं है, देन वी कैन यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन इन इट्स प्लेस. सो इन दिस केस द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बिकम z is equal to x bar minus mu upon small s by under root n, and this follows n01. Now next, one more important point regarding this test of significance is the confidence interval. A confidence interval is a type of interval estimate for a population parameter. कॉन्फिडेंस इंटरवल एक टाइप ऑफ इंटरवल है जो पॉपुलेशन पैरामीटर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, लेकिन हमें एक इंटरवल बता देता है जिस इंटरवल में फंक्शन, जिस इंटरवल में पैरामीटर की वैल्यू लाई करती है. ठीक है जी. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, it consists of range of values that act as good estimates of the unknown population parameter. However, the interval computed from a particular sample does not necessarily include the true value of the parameter. अगर जरूरी नहीं है कि हम सैंपल से जो एक इंटरवल को कैलकुलेट करेंगे उससे एक पैरामीटर की सही वैल्यू हमें मिल जाए. It's just an approximation. So we have different level of confidence. That is, we are 99% confident that the true value of the parameter is in our confidence interval. हम 99% कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है पैरामीटर की इस इंटरवल में लाई करेगी. We express that 99% of the hypothetically observed confidence intervals will hold the true value of the parameter, right? So the confidence level is the complement of the respective level of significance. जितना level of significance है उसका जो complement है उसका नाम है confidence level. जैसे अगर 5% level of significance है तो 95% confidence level होगा. ठीक है. और अगर 1% आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो कॉन्फिडेंस लेवल होगा 99%. अब हम अगर ग्राफ की फॉर्म में बात करें, this is z is equal to 0. This is a critical region. Critical region is that region where null hypothesis is rejected when it is assumed to be true. So ये अल्फा है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और ये क्या है सारा का सारा जो पीछे बचा है ये 1 माइनस अल्फा. ये है कॉन्फिडेंस लेवल. This is a region of rejection. ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाएगा क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड दिस इज द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट. So 99% confidence interval for population mean mu का क्या फॉर्मूला है? म्यू बिलोंग्स टू एक्स बार प्लस माइनस 99% पे जो वैल्यू होएगी वो यहाँ पे हम लगाएंगे. यहाँ पे z की वैल्यू 0.01 जो भी हमारे पास है, पीछे भी टेबल से देखते हैं क्या वैल्यू है, इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, दैट इज म्यू बिलोंग्स टू एक्स बार प्लस माइनस.
सो 95% पे 1.96 वैल्यू होती है और 99% पे हमारे पास वैल्यू है 2.58. सो दिस इज 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर. अगर सिग्मा गिवन है तो सिग्मा बाय अंडर रूट एन लगाएंगे. अगर सिग्मा नहीं गिवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा. ठीक है जी. दिस इज द 99%. सिमिलरली 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. बेटा कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब यही है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू है उसकी वैल्यू इस इंटरवल में लाई करने के 95% चांसेस हैं. राइट. सो म्यू बिलोंग्स टू कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर म्यू. सो म्यू बिलोंग्स टू एक्स बार प्लस माइनस यहाँ पे z 0.05 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार. So this becomes mu belongs to x bar plus minus 1.96 है टू टेल पे वैल्यू. ये डिपेंड करेगा किस टेल पे हम बात कर रहे हैं. सो ये सिग्मा आएगा या ये एस आएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन. ये बात हमेशा याद रखनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल सैंपल के लिए नहीं होता, क्योंकि सैंपल तो बेटा हम निकाल लेते हैं. सैंपल ऑब्जर्वेशंस निकाल ली, वहां से मीन मीडियन मॉड जो मर्जी निकालिए. प्रॉब्लम कहाँ है, पॉपुलेशन की. ठीक है, क्योंकि सैंपल नहीं पॉपुलेशन मीन के करेक्टर्स को करेक्टराइज करना. So now let's, and similarly there is a one more confidence interval. जिसको 100% confidence interval हम कहते हैं. तो वहां पे वैल्यू कितनी लगेगी, वहां पे याद रखना है जब 100% की बात की तो वहां पे वैल्यू लगनी है 3. राइट. Now we have the example. A sample of 400 male students is found to have a mean height of 67.47. वो कह रहे हैं हमने 400, अब देखो n इज ग्रेटर देन 30. n क्या है, n इज ग्रेटर देन 30 लिया हमने. ठीक है, क्योंकि जो लार्ज सैंपल है, लार्ज सैंपल हमेशा ही किसके लिए होता है, लार्ज सैंपल होता है जो लार्ज सैंपल है, इट इज फॉर द we are doing the large sample set. So a sample of 400 male students is found to have a mean height of 67. 400 मेल स्टूडेंट्स का सैंपल लिया गया, मीन स्मॉल एन इज इक्वल टू 400. राइट. और उनकी मीन हाइट कितनी है, 67.47. मीन स्मॉल एक्स बार कितना दिया है, 67. Can it be a reasonably regarded as a sample from a large population with mean height 67.39 and standard deviation 1.3? तो क्या हम इस सैंपल से बता सकते हैं कि ये सैंपल एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन हाइट कितनी है, 67.3. इट मींस पॉपुलेशन का मीन कितना दिया है, 67. उसको हमने जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल. So we have given, it means this is the test related to the test of significance of a single mean. So given a sample of male students of sample size is equal to n, a large sample with sample mean height x bar 67.47. Here we want to test whether this sample can be regarded as a sample taken from population with mean height mu and population standard deviation this. So therefore what we will do, we will set up the null hypothesis that population mean height is equal to mu, that is 67.39. उन्होंने ये नहीं कहा कि the population can it be reasonably regarded as a sample from a large population with mean height greater than or less than, कुछ नहीं बताया. जब greater less की कोई बात ना की हो, it means mu को क्या लिखना है, not equal to. So this is a two-tailed alternative, मतलब two-tailed test लगेगा यहाँ.
नाउ थर्ड स्टेप वी विल सेट द, अब देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेना है. सो वी विल टेक द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एज 5%. इन जनरल हम 5% लेके चलते हैं. Now the next is the test statistic. You will add the word here test statistics under H naught. H naught के behalf पे test statistics लगाया जाता है. So you will apply the formula. So now everything is given to you. Every value is given to you. You will just calculate the value of Z. It comes out to be 1.23. So table value देखेंगे. टू टेल पे टेबल वैल्यू और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू हमारे पास पड़ी है 1.96. The critical value of Z at alpha 5% level of significance for two-tailed test is mod of Z is equal to 1.96. As the calculated value of mod of Z, अब कंपेयर करो बच्चे, Z कितना है हमारा 1.23. ठीक है जी, mod of Z कितना आया है, mod of Z is 1.23. Z 0.05 कितना है 1.96. अब इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, mod of Z किससे छोटा है, इससे छोटा. ठीक है जी. इट इम्प्लाइज null hypothesis is accept. और सबसे पहले हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ Z is not significant. वैल्यू ऑफ Z सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच के, देखो बेटा ये तो कांस्टेंट है, इधर वेरिएशन आ रही, इनके बीच के डिफरेंस का नाम Z है एक्चुअली. ठीक है जी. सो द वैल्यू ऑफ Z इज नॉट सिग्निफिकेंट. Z की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. दैट इज, देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference between sample mean and population mean. दोनों सेम है, इसका मतलब सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पॉपुलेशन मीन. सो hence we conclude that population सैंपल, जो भी लाइन लिखी हुई है, जो पूछा है वो कंक्लूजन में एज इट इज लाइन लेनी है. देयरफॉर सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, पूरी लाइन लिख के. ठीक है जी. विद मीन इज इक्वल टू जितना भी था 67.39 इंचेस एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन टू अस. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope the point is clear to all of you.